Yes, good morning, everyone. We have started the chapter number 5, Principles of Inheritance and Variations. In that, uh, until the last lecture, we had completed monohybridization experiment. This is done. One or two related points of discussion, and then we can move to the next topic. Point is that if I ask you a question, pay attention. If I ask you a question, this organism, is it homozygous dominant, homozygous recessive, or it is heterozygous? Homozygous dominant. I want you to understand the fact that we must remember it is homozygous dominant for height character. We need to specify that part. You understand? It is homozygous dominant for which character? For which character? Height. That specification must come while we mention the genotype pattern over there. I explain to you what I am trying to say. Let's assume it was capital D, capital D. But for position of flower, it was small a, small a. The way there are genes or alleles or factors for height in this organism, same way for another character, the position of flower, it could be small a means terminal flower, homozygous, recessive for the flower color. So, can I say this organism is homozygous dominant? Can I say this is homozygous recessive, or can I say it is heterozygous? For height, it is homozygous dominant. For position of flower, it is homozygous recessive. For shape of a seed, it is heterozygous. For color of a seed, it might be again homozygous dominant, or for another, it might be heterozygous. So my one line that you have to remember is an organism is never homozygous dominant, nor it is homozygous recessive, nor not even it is heterozygous. For individual character, the organism can be heterozygous or homozygous dominant or homozygous recessive. As a whole, the organism is not homozygous dominant or heterozygous or homozygous recessive. How many of you have understood this fact, what I said? Because we have hundreds of characters in our body. So for one character, I may be heterozygous. For another character, I may be homozygous dominant. For third character, I may be homozygous recessive. Again, for the fourth, I may be homozygous recessive. For fifth, I may be homozygous dominant. For sixth character, I may be what? Heterozygous. So which one is a better? Option one. An organism is homozygous or heterozygous? या फिर an organism is homozygous या heterozygous for a given character? Which option is a better way of mentioning the organism status? Be it the second one. I tried my best to convey this information and hope you all have understood and followed it, that never consider organism as a whole homozygous or heterozygous. An organism could be any one out of these three for a given character.
नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी को ये लाइन अच्छा लगा तो लिख लेना. If you like this line, you should write down that organism as a whole never been homozygous or heterozygous. It can be homozygous recessive, homozygous dominant, or heterozygous for a given character genotype. Genotype for a given character. In that context, it can be one out of these three possibilities. Clear? Next one. In this experiment, I'm explaining the term reciprocal cross. In this experiment, pure tall plant is used as a female plant. Pure dwarf plant is used as a male plant. And we got this continuity of the experiment. Now, my point is that here you have to transfer the pollen from here to here, from male dwarf plant to the female tall plant. In another experimental setup, you can use a pure tall plant as a male one and a pure dwarf plant as a female one. Results are gonna be the same. अगर tall plant को आपने male के जैसा use किया या फिर female के जैसा use किया, it makes no difference on results, at least in this monohybridization experiment. So what happens? Such a cross in which for a given pair of parents, one is used as a male and another one is used as a female, we reciprocate them as a female and male. Such cross is known as reciprocal cross. In one cross, one variety is used as a male and another as a female. In another cross, the one used as a male is now used as a female and one used as a female is used as a male. So such a cross is known as reciprocal cross. What is reciprocal cross? How many have understood? In a typical monohybridization Mendelian experiment, parent generation are pure lines. So when pure lines are crossed, one is used as a male and another one is used as a female. In a reciprocal cross, the arrangement is inverted. One that was used as a male in first round will be used as a female and vice versa for the another. Such a cross is known as reciprocal cross. How many of you can explain the term reciprocal cross, if not pure definition, but if you are asked to explain, चलो बोलो reciprocal cross क्या है, तो आप कैसे explain कर पाएंगे किसी को? Nandini, go ahead. Yes, so in the first cross, the one is used as male and the other one is used as female in monohybridization experiment. And when the other cross is carried out, the earlier one used as the male is now used as the female, and the earlier one used as female is now used as male. So this cross is known as reciprocal cross. Fabulous. Very good answer. Students, have you understood what is a reciprocal cross? Mind you, for monohybridization experiment, typical monohybridization experiment, this reciprocal cross will not have impact on F1 generation. In F1, all plants are
tall, irrespective of what was used as a male plant in one round and what was used as a female, another male plant in a previous cross. देखो ये male plant नहीं है, plant तो bisexual flower वाला ही है. We use it as a male and we use another plant as a female. So there is nothing like a male and female plant for such bisexual nature plants over there. Just that we used one of them as a tall plant, as a male plant, and another one as a female plant. And in another round, parents with the Hitarth, very good reply. As usual, in last 2-3 lectures, Hitarth is actively participating, and he has given a very good definition also. In a monohybridization, the two crosses in which the sexes of the parents are reversed, we call it as the reciprocal cross. Thank you to Nandini and Hitarth. चलो आगे जाते हैं. Just imagine this one. What is this F1 plant? You understand, na? F1 plant means first filion or first filial generation plant. Any one plant from the first generation in this, after the parents, first generation of the progeny in the monohybridization experiment. Imagine if it is crossed with this or else if it is crossed with this. Tell me, P-dom means what? P-dom means what? Dominant parent, isn't it? Exactly, you guys are right. Dominant member from the parent generation, isn't it? That is called P-dom. Now imagine a cross of F1 with P-dom. Yeah, P-res means what? Recessive parent? Exactly. Now, any such cross is identified as back cross. पहले मैंने आपको reciprocal cross explain किया, दूसरा term explain कर रहा हूं, back cross. What is a back cross? Who will define other than Hitarth and Nandini? They have been already given a lot of responsibility. Others should participate. What do we mean by a back cross? Nobody has understood. Was it so difficult? Astha, unmute and speak. Astha Solanki, unmute and speak. Yes, a hybrid with one of its parents with the same genetic characteristics as one of the parent. With which characteristic? Chalo, Astha Gokhale, she also raised hand. Yes, sir. Am I audible? Yeah. So the cross of a parent with its own progeny. Okay, fine. A cross of a F1 generation member with any one of the parent, either dominant parent or else recessive parent. Okay. In a way, it is a heterozygous versus pure line. How many
agree with my statement? टेक्निकली तो क्या हो जाता है, F1 मीन्स व्हाट, ऑलवेज, अगर टिपिकल एक्सपेरिमेंट है तो F1 इज ऑलवेज हेटेरोजाइगस, एंड टिपिकल एक्सपेरिमेंट है तो P इज ऑलवेज होमोजाइगस. हाँ, उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या फिर होमोजाइगस क्या हो सकता है, रेसेसिव. सो टेक्निकली इट इज कॉल्ड a cross between heterozygous versus homozygous. Theoretically, it is a cross between F1 generation offspring with any one of the parent organism. That would be known as a back cross. चलो, यहां तक क्लियर है. Then I'll go to the third one. I hope you have been writing the definitions. Reciprocal cross and back cross. That is very good on your part. My question number 3, have a look and reply to my question. See, एक डोमिनेंट होता है अलील और एक रेसेसिव. पता है रेसेसिव अलील कब एक्सप्रेस होता है? डोमिनेंट अलील होता है, रेसेसिव अलील होता है. आपको पता है रेसेसिव अलील कब एक्सप्रेस होता है? हाँ, इन होमोजाइगस कंडीशन, या फिर बोथ आर रेसेसिव, या बोलते हैं in an absence of a dominant allele. Am I right or wrong? पता है डोमिनेंट एलील कब एक्सप्रेस होता है? दो कंडीशन में एक्सप्रेस होता है. अगर रेसेसिव होमोजाइगस, हाँ, ये हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है एंड होमोजाइगस डोमिनेंट में भी एक्सप्रेस होता है, जबकि ये सिर्फ होमोजाइगस रेसेसिव वाली स्टेटस में ही एक्सप्रेस होता है. डोमिनेंट एलील can express itself in presence or in absence of recessive allele, जबकि recessive allele can express itself only in absence of dominant. ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड करना है. Now my point is that if I show you one dwarf plant, I'm talking about garden pea. I'm giving you one garden pea plant which is dwarf. Can you tell me what will be its genotype? उसका फिनोटाइप देख के आप मुझे उसका जीनोटाइप बोल सकते हो? यस सिद्धार्थ, यू राइट, स्मॉल टी. बिना देखे आगे स्टडी किए आपको पता चल जाएगा. ओके, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए. इफ आई गिव यू वन पी प्लांट विच इज टॉल, कैन यू टेल मी विच वन इज इट्स जीनोटाइप लुकिंग एट द प्लांट? Genotype write down. क्यों लिख दिया उन्होंने? हो सकता बापू. नहीं, आप लोगों ने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना. मैं बोलता हूं, मैं फिर से बोलता हूं, आप लोग सुनो. आस्था सोलंकी रॉन्ग. स्मॉल टी नहीं हो सकता बापू. क्या कर रहे हो आप लोग भी? माय क्वेश्चन इज, नहीं, लिसन एट लीस्ट. हे प्रभु, लिसन एट लीस्ट. स्टॉप रिप्लाइंग. My question is that you saw the dwarf pea plant and you said its genotype is confirmed small t. Now, if you see the tall plant, obviously pea plant, and if you have to write down, okay, write only one particular genotype that it is having with confirmation only. देख के आपको लिखना है. Can you write down? No, not possible.
क्योंकि आप लिखोगे कैपिटल टी तो मैं बोलूंगा वो तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में बोल आप लिख सकते हो कि सर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैं बोलूंगा कैपिटल टी। इसमें मैं नहीं बोल सकता। इसमें क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है तो वो एक ही सिचुएशन में एक्सप्रेस होता है व्हेन ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस रेसेसिव फॉर दैट कैरेक्टर। बट जब डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है तो it can express in a homozygous dominant as well as in a heterozygous condition. How many understand this line? So looking at phenotype, you can predict the genotype in case of recessive expression. You cannot predict the genotype in case of dominant expression. ये लिख लेना। ये जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना। Very important. Important point I am explaining. You all must understand that if the organism has shown recessive phenotype, you can predict its genotype. But if organism has shown dominant phenotype, you cannot predict its genotype. Because there are two possibilities instead of one. It can be homozygous dominant or it can be heterozygous. In both scenario, phenotype can be dominant over there. Who will explain this last line of mine? आप में से किसका कैलिबर है जो ये लाइन को रिपीट कर ले? If organism shows, oh again Nandini, I cannot give so much of trouble to her. Who else is there? Let me see. Vandit, आप बोलिए. Hello, sir. हाँ. If there is an organism with recessive phenotype, we can predict its genotype. But if a organism shows dominant phenotype, we cannot predict its genotype. It could have which two possibilities? TT or अरे TT वाले ऐसा बोलना homozygous dominant या heterozygous, both possibilities prevail. Fine. आगे तक का करेक्ट था, so well done. कोई और बोलेगा फिर से यही चीज? He was right. यही चीज मैं आपसे रिपीट करवाना चाहता हूं इसलिए. क्रिशा शाह, फिर से वही लाइन. हाँ जी, स्टार्ट कीजिए. Yes, sir. If an organism shows recessive phenotype, its genotype can be predicted. But if an organism shows dominant phenotype, its genotype cannot be predicted. You understand, all of you, this thing. Then I'll take you to the next level. Now, if I have to find which is the genotype of this one, तो मुझे क्या करना चाहिए? कैसे पता चलेगा? I am given a tall plant, garden pea plant, and I am asked to find out its genotype through experiment. So what should I do? I repeat my question. If I am given, or if you are given a tall pea plant, you don't know, you know its phenotype, but you don't know its genotype. It could be either capital T, small t, and capital T. So you have to work out that. Through which way, through which arrangement or experiment you can work out whether it is homozygous dominant or heterozygous one. Many of you are writing that it is to be self-fertilized. उससे भी एक better way है. Let me explain that better way. Have a look at this one. If you have a tall plant,
with unknown genotype. Either it can be capital T, or it can be capital T, small t. So the best thing to do is cross that plant with homozygous recessive parent, जो dwarf है इस केस में. जैसे ही आप उसको क्रॉस करोगे with your tall plant with unknown genotype, दो पॉसिबिलिटीज होगी. एक, या तो all plants that you get in the next generation are tall. अब ये कब हो सकता है? When your tall plant was homozygous dominant, capital D, capital D. Look at the checkerboard, capital D, small d, small d. All plants in next generation are supposed to be which one? With capital D, small d. It's tall plant. Given plant was homozygous dominant. You could understand its genotype. एक दूसरी possibility थी कि your tall plant with unknown genotype was heterozygous, hypothetically. So look at the possible results. Capital T, small t, small t, small t. Look at the cross. Half of them with capital T, small t, they will be tall. Other half will be with small t, they will be dwarf. Bottom line, 1:1 ratio for 1:1 ratio for mute yourself. 1:1 ratio for tall to dwarf. That would be the result over here. Then your given plant was heterozygous. How many could understand this arrangement? How many could understand this? See, such a cross is known as test cross. मैंने आपको reciprocal cross explain किया. I explained back cross. I have also explained test cross. It is an experimental cross of an organism with dominant phenotype. यहाँ पे tall plant with unknown genotype. The plant with a known phenotype, dominant phenotype, but having unknown genotype. You don't know whether it is homozygous dominant or heterozygous. So an experimental cross of an organism with dominant phenotype but unknown genotype with a cross with an organism having recessive phenotype and genotype. वो तो पता है, dwarf small d and क्या है, dwarf plant है. उसके साथ क्रॉस करने से पता चल जाएगा. अगर आपको रिजल्ट मिलता है कि all show dominant phenotype in the F1 generation, that means your given plant was homozygous dominant. And if you see both the expressions, dominant and recessive in 1:1 ratio, then your given plant was heterozygous plant. Such a cross is known as test cross. Is this clear? The test cross. देखो, इस क्रॉस का ऑब्जेक्टिव क्या है? So as to explore, this is to explore the genotype of a plant whose dominant phenotype is expressed, but genotype is unknown. You have been given a plant with a dominant phenotype, but its genotype is not clear. So you can explore, you can determine, you can work out it by crossing that plant with the recessive
homozygous recessive organism. This is known as which one? Test cross. Obviously ये तो typical monohybridization जैसा है, तो test cross में really ये consider किया जाता है 1:1 ratio is called as test cross ratio. Phenotypic genotypic ratio of the test cross is accepted as 1:1. Who will define test cross, its significance? चलो कौन ट्राई करेगा? Come on, who will try? Diksha, you should try. Yes, sir. So test cross is used to predict the genotype of an organism which shows dominant phenotype. So Exactly. Yeah. Done. Please So to know, understand the significance of a test cross, all of you. For a recessive organism, if it has shown recessive phenotype, you can predict its genotype. It is possible. But for a dominant phenotype expression showing organism, you cannot predict its genotype. There are always two possibilities. Either it is homozygous dominant or it is heterozygous. A cross worked out to explore whether the plant showing dominant phenotype and with unknown genotype, whether it is heterozygous or it is homozygous dominant. To work out that the cross is carried out, it is called as test cross. The one in which the plant with a dominant phenotype and unknown genotype that is crossed with recessive parent. Simple as that. टेस्ट क्रॉस में किस प्लांट का किसके साथ क्रॉस किया जाता है? चलो कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? टेस्ट क्रॉस is arranged between which two plants? Nandini. Test cross is arranged between a dominant, an organism having dominant phenotype but an unknown genotype with an organism having a recessive phenotype and genotype. Very, very good answer. Plant with a dominant phenotype and yet unknown genotype to be crossed with plant or organism, rather organism to organism. So organism with a dominant phenotype and unknown genotype to be crossed with organism with a recessive genotype and phenotype. That is leading to the test cross. और जब भी टेस्ट क्रॉस का शॉर्ट नोट आए तो ये चिपका देने का आपको वहां पे इतना कि a plant is with a dominant phenotype, that is in this case tall, but its genotype is unknown. We should cross it with the recessive plant, that is a dwarf plant. If the result comes that all are tall, that means the given plant was homozygous dominant. If results are 1:1, one tall to one dwarf with that ratio, then the given plant was heterozygous. So that is how you can work out the genotype of this genotype of this plant with a known phenotype and unknown genotype.
break for 5 minutes and we resume our work. So let us see the concept of dominance. You know, when Mendel explained about dominance, he did not know the details of its mechanism, its working modalities, how it works. But he knew that out of the two traits, one tends to be dominant, other tends to be recessive. In today's world, with a lot of information available about the genes and further their action, etc., we know that genes influence the characters by producing certain enzymes. So in lieu of that information, in light of that information, we can understand that the concept of dominance, how it works. Let's assume that the given character is controlled by a particular gene, and this gene produces a certain enzyme. This enzyme is responsible for a particular character. It has, let's say, 2 alleles. Most of the time there are 2 alleles. It's not compulsory every time. But most of the time the given gene has 2 alleles. Example, gene for height. Its 2 alleles are capital D and small d. Let's say that one of them is a dominant allele, capital D. Let's say that another one is a recessive allele, small d. We can do it even for another one. Color flower के लिए gene consider करके capital V, small v. Position of flower के लिए gene consider करके capital A, small a. We can go for any one such combi. Whichever is a dominant allele in a normal practice, there are always exceptions to the things. ये generalized statement दे रहा हूं. Normally, a dominant allele produces normal enzyme. Genes produce enzyme to control the character. A dominant allele, dominant gene will produce a normal enzyme. In presence of that normal enzyme, certain reaction occurs properly. Somewhere there is a substrate which is turning into the product with the help of the enzyme. So as long as that normal allele is there, that enzyme is available. As that enzyme is available, the reaction occurs, and this reaction leads to expression of character in a normal way. For the given character, certain product is required. For a certain product to be formed from the substrate, certain enzyme is required. And that enzyme is prepared by the normal dominant allele. एक normal trend मैंने explain किया how the dominant allele works. Now, instead of a dominant, if you have a recessive allele, let's say कि small d है, तो recessive allele के influence के 3 possibilities होते हैं. A recessive allele can influence the character in a 3 different ways. देखिए, इस allele से ये allele different होगा, तभी तो 2 versions हैं. एक जैसी सेम चीजें हो तो उसको 2 different version नहीं कहेंगे. So there is some difference between them. So dominant allele के compare में recessive allele with slightly different information, 3 possibilities को हम explore करेंगे. Number 1, the enzyme that was to be produced by the allele, it will be produced exactly in the same way, even after being recessive. कोई change नहीं है enzyme में. Things got changed and yet it was not reflected in enzyme formation. It remained as it is. Second, with a different information from dominant allele, the recessive allele prepared an enzyme which was different from the required one, so it became non-functional enzyme. And third possibility, that the information compared with the dominant allele was so different in a recessive allele
that it could not prepare enzyme at all. अगर डोमिनेंट एलील नॉर्मल एंजाइम देता है तो इसके कंपेयर में रेसेसिव एलील के पास 3 पॉसिबिलिटी. It can also give the same enzyme in a same manner. Second, it can give an enzyme, but it may be a non-functional enzyme. Third, it may not give an enzyme at all. 3 options available. अच्छा, सोचो बाय चांस फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि एंजाइम was as it is almost the way it was prepared by dominant allele. Recessive allele is giving this normal enzyme, so expression was also supposed to be same. The way there was a dominant, similar expression will be there in a recessive. Phenotype will be same. बहुत ही कम बार होता है कि डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों अलील का एक्सप्रेशन एक जैसा हो. देखो यहाँ पे तो डिफरेंट है. डोमिनेंट वायलेट कलर था तो रेसेसिव कौन सा कलर था? व्हाइट. डोमिनेंट अगर एक्सियल पोजीशन थी फ्लावर की तो रेसेसिव कौन सा था? टर्मिनल. डोमिनेंट अगर 2 मीटर्स हाइट थी तो रेसेसिव क्या था? 1.5 मीटर. तो यहाँ पे तो डिस्टिंक्शन है फिनोटाइप्स में, डोमिनेंट एंड रेसेसिव फिनोटाइप्स में. कभी ये भी हो सकता है कि वहां पे डिस्टिंक्शन ना हो, अगर तो रेसेसिव एलील नॉर्मल एंजाइम प्रिपेयर करता है. बट दूसरे 2 कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस होते हैं कि या तो अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम है या तो अगर एंजाइम प्रिपेयर ही नहीं हुआ, तो इन एनी ऑफ दिस 2 सिनेरियो phenotype will be drastically different from the dominant phenotype. Recessive phenotype will be drastically different from the dominant phenotype. ये जो 7 characters हमने स्टडी की है किसके? पी प्लांट के. In each case, recessive phenotype was drastically different from dominant phenotype. तो हम कह सकते हैं कि वो 7 केस में या तो सेकंड पॉसिबिलिटी थी या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी थी, so that phenotypes are drastically different from the dominant one, the recessive phenotypes. How many have understood what I have explained? I have explained the concept of dominance, in which I said that every gene affects a given character via producing an enzyme. I said that normally a given gene, normally and generally a given gene has 2 alleles. One is considered dominant, the other one is considered recessive. आगे भी मैं फिर से बोल रहा हूं, generally it happens that a dominant allele gives normal expression of character. For that it produces certain enzyme. That enzyme converts certain product, substrate into a product. And with the help of that product, a given character is expressed. Then we say how the recessive allele works. So it can have 3 possibilities. Either it is making the enzyme which is less efficient or normal to that of dominant one. Second, it makes an enzyme but it is inefficient. And third, it does not make an enzyme. Information is so different, it doesn't make an enzyme. In this scenario, if a first option is happening, phenotype will be more or less same, not drastically different. But अगर enzyme is not formed or it is formed which is non-functional, तो फिर आपका recessive phenotype drastically different होता है. You understand this? Now my question number 1, do all genes have only 2 alleles?
Yes or no? No. Majority genes have two alleles. Some have one allele, no variant, and others may have more than two also. Acha. Do all dominant alleles always provide normal expression of a character? No. Sometimes हमें पता चलेगा कि रेसेसिव कैरेक्टर अच्छा लगता है ऑर्गेनिज्म में देन द डोमिनेंट. एक एग्जांपल है, ह्यूमंस में 5 फिंगर्स होते हैं ना, एक थंब एंड 5 फिंगर्स. हाँ या ना? 4 फिंगर्स टोटल 5. ओके. किसी को एक्स्ट्रा थंब हो उसको कहते हैं पॉलीडेक्टाइली कंडीशन. पॉलीडेक्टाइली. पॉलीडेक्टाइली नॉर्मल पॉलीडेक्टाइली डोमिनेंट एलील से होता है और नॉर्मल 5 फिंगर्स रेसेसिव एलील से होता है. सो जो हमारा माइंडसेट है ना कि डोमिनेंट हो वही अच्छा कैरेक्टर, रेसेसिव हो बुरा कैरेक्टर, ऐसा एवरी टाइम जरूरी नहीं है. रेयरली इट कैन बी द अदर वे अराउंड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड. हैव यू अंडरस्टूड? एक तीसरा पॉइंट. ये अलील आया कहां से? एक या दो जो एक्स्ट्रा रेसेसिव अलील है या दूसरे अलील है वो कहां से आए? तो जब भी इवोल्यूशन होता है, एज एंड व्हेन इवोल्यूशन हैपेंस, ये सिर्फ हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए जिसका इंटेलेक्चुअलिटी लेवल हाई है. आप में से 60 प्लस जो भी स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट जो भी है, वो ट्राई करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने का. बट अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो डोंट टेक इट हैवीली, टेक इट लाइटली, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है. तो आपको नहीं पता चला तो छोड़ देने का. ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंसान के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को क्वेश्चन रेज हुआ कि अलील आया कहां से, तो सोचो कि एक स्पीसीज है, उसके पास कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट जीन्स होते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल है, उसके लिए हाइट, उसमें हाइट का एक जीन होगा, लेट्स से जीन कैपिटल टी. अब जब ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है, कौन सा प्रोसेस? इवोल्यूशन. तो उस टाइम पे, एट दैट टाइम, द टाइम ऑफ इवोल्यूशन, फ्यू ऑर्गेनिजम्स में ये वाला जीन, द जीन विथ कैपिटल टी, it may have undergone mutation and its another version may have originated. That later originated version of the same gene which started appearing in the population or a species is known as allele. ये एक ओरिजिनल वर्जन था जीन का. फिर ओरिजिनल जीन में जो वेरिएशंस आते हैं ड्यू टू म्यूटेशंस, तो नए जीन का ओरिजिन होता है, अराइवल होता है पॉपुलेशन. दिस इज हाउ अलील्स डेवलप. जनरली ये पहले से था तो ये डोमिनेंट जैसे बिहेव करता है, ये बाद में डेवलप हुआ तो ये नॉर्मली रेसेसिव जैसे वर्क करता है. बट जो ओरिजिनल था उसके लिए हम यूज करते हैं वाइल्ड जीन. जो बाद में डेवलप हुआ थ्रू म्यूटेशन, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं म्यूटेंट जीन. किसी में इस जीन में एक और वेरिएशन आके एक और अलील हो सकता है, तो उसमें एक की जगह पे 2 एक्स्ट्रा अलील भी हो सकते हैं, जिसको हम मल्टीपल अलील कहते हैं. ये भी हो सकता है. सो फ्रॉम स्टडीइंग ओनली आई वाज कनेक्टिंग दिस विद इवोल्यूशन. सो एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी में इस जीन में कोई चेंज नहीं आया अब तक, तो उसका अलील नहीं डेवलप हुआ. तो नो एक्स्ट्रा अलील पोजीशन कंडीशन कैन आल्सो प्रिवेल. 2 टिपिकल वाली होती है कि एक ओरिजिनल या वाइल्ड जीन और उसका एक वेरिएंट और म्यूटेंट जीन.
या फिर किसी का एक ओरिजिनल वाइल्ड जीन और उसके एक या उससे ज्यादा, दो या उससे ज्यादा म्यूटेंट या वेरिएंट अलील हो सकते हैं. So out of 60, maybe even not 6 may have understood what lecture I am giving for this topic, but मेरा explanation ऐसा था, it was regarding how alleles originate in a species during the evolution. For every character, the species may have a one gene. That gene may have changed through mutation during the process of evolution. So that gene also started appearing in the population. It started showing the different expression. जिसमें वो अलील आता है उसमें वो एक्सप्रेशन होता है, नहीं आता है उनमें वो ओरिजिनल वाला भी रहता है. ऐसे ओरिजिनल का वेरिएंट या फिर वाइल्ड में से म्यूटेंट या फिर एक अलील का ओरिजिन इस तरीके से होता है. I have explained. Have you understood? एक स्टूडेंट को पता चला, वो मेरी अचीवमेंट. Now here we conclude the topic of monohybridization and related aspects. Now I take you to the next topic, which is about a phenomenon called incomplete dominance. Incomplete dominance. See, what happened is after 1900, once the Mendel's work got rediscovered, scientists started repeating the Mendelian experiments. The pattern point of view repetition I'm talking about. Not only in the pea plant, but they started picking the other plants and organisms. In order to understand that whatever Mendel has explained in his work on pea plant, is it followed? Is the same result achievable in the other organisms? Are Mendelian laws universally true? Are they acceptable in all organisms? So for that, scientists started working upon different organisms. One of the organisms that was worked upon, and that is known as snapdragon. The name of the plant is snapdragon. उसका दूसरा नेम है डॉग फ्लावर प्लांट, या उसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम something something. Species is something, एंटीराइनम is the genus. So popularly known as snapdragon or dog flower. Scientific name of that plant was Antirrhinum, and here is the experimental result. Look at this one. The scientists who were working upon this plant, they took a pure red plant. I mean pure red flower bearing plant. My mistake. Plant with pure red flower. आपको पता है ना प्योर का मीनिंग क्या होता है? सेवरल जनरेशंस तक उसके रेड फ्लावर्स ही एक्सप्रेस हो रहे थे. ऐसी वैरायटी उसकी सेल्फ ब्रीडिंग हो रही थी. उसकी 6th जनरेशन 5th जनरेशन को हम क्या कहते हैं? प्योर फॉर रेड फ्लावर. That was crossed with the another expression for the flower, pure white flower showing variety. अब इन दोनों का क्रॉस किया. जैसे क्रॉस किया था ना प्योर टॉल वर्सेस प्योर ड्वार्फ, तो एक्सपेक्टेशन वाज दैट कि भाई रेड वुड बी द डोमिनेंट, सो ऑल प्लांट्स इन द F1 will show red flowers over there. रेड फ्लावर तो नहीं मिले. बाद में पता चला कि चलो सोचते हैं कि व्हाइट वुड बी द डोमिनेंट एंड रेड वुड बी द रेसेसिव. तो अज्यूमिंग के F1 में सभी व्हाइट मिले, तो वो व्हाइट भी नहीं मिले. न तो रेड फ्लावर्स मिले F1 जनरेशन प्लांट्स में, न तो व्हाइट फ्लावर्स. एक्चुअली जो फ्लावर्स मिले वो
pink flower smell है. All the plants in F1 generation had a pink flowers. Interesting one. Matter did not end over there. Matter आगे ले गए वो. क्या किया? ये जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे, they were allowed to go for self fertilization with this genotype capital R small r, the heterozygous condition. And with pink flowers, they were subjected to which one? Self fertilization. जब उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो आपको पता है ना कि एक साइड पे बॉक्स में क्या रखेंगे हम? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और दूसरी साइड पे भी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. ये उसके गैमेट्स है. यहाँ पे मिलेगा कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर. Now those with capital R were red. Those with small r were having white flower. Simple. But those with capital R small r, 2 out of these 4, they had a pink flower. अब इस फिनोमिनन से एक चीज क्लियर हो गई. नंबर 1, चलो आप अगर होते साइंटिस्ट की जगह पे और आपने अगर ये एक्सपेरिमेंट किया होता और ये रिजल्ट्स मिलते which are not matching with typical Mendelian monohybridization showing dominance, where F2 generation shows 3:1 ratio for phenotype, यहाँ पे 1:2:1 मिला. तो आप इस रिजल्ट्स को देख के क्या कंक्लूड करते हैं? सोचिए. किसी एक का थॉट तो करेक्ट होगा. तो ऑल ऑफ यू शुड ट्राई सो दैट कहीं पे कुछ क्लिक हो जाए. अगर आप साइंटिस्ट होते और आप स्नैपड्रैगन प्लांट पे वर्क करते, उसके प्योर रेड फ्लावर प्लांट को प्योर व्हाइट फ्लावर प्लांट से क्रॉस करके F1 जनरेशन प्रोड्यूस करते, उसमें आपको पिंक फ्लावर्स मिलते. आप फर्दर जाके उसके सेल्फ फर्टिलाइजेशन से F2 जनरेशन ऑब्टेन करते, उसमें अमॉन्ग्स द गिवन प्लांट्स ऑफ F2 1:2:1 रेशियो में, जीनोटाइपिक फेनोटाइपिक रेशियो में प्लांट्स मिलते, where 1 red flower plant, 1 white flower plant के सामने 2 pink flower plant मिलते. तो आपका एक लाइन का कंक्लूजन क्या होता? सोच के दिखाइए. स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेनेशन में ही वो बोल दिया है. जब इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्ट किया उसी टाइम पे मैंने बोल दिया था. Am I audible to all? Do you understand my question? You want to reply for the same? What will be your conclusion from given observations? अगर ये आप एक्सपेरिमेंट करते, आपका ये ऑब्जर्वेशन होता, तो आपका कंक्लूजन क्या होता? वो मैं पूछ रहा हूँ. वंदित इज राइट. उसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं, एक पॉइंट मिसिंग है इसलिए. अगर मैं होता या आप होते तो ये कंक्लूजन निकलता आइडियली कि मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली करेक्ट. पी प्लांट में था कि कैपिटल टी स्मॉल टी इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, आउट ऑफ द 2 allele one is dominant over the other. This is called law of dominance. In this case आपको पता है कि प्योर टॉल सिर्फ एक अलील पास करेगा, अलील फॉर रेड फ्लावर. आपको पता है व्हाइट फ्लावर वाला प्योर प्लांट एक अलील पास करेगा, स्मॉल आर फॉर व्हाइट फ्लावर, कैपिटल आर फॉर रेड फ्लावर, स्मॉल आर फॉर व्हाइट फ्लावर. माय मिस्टेक इफ आई हैव मेड अ मिस्टेक, huh? Please. So capital R allele for red flower, small r allele for white flower from the parents must have gone into the offspring. Genotype रहेगा capital R small r, capital R small r. तो organism तो heterozygous है. As per Mendelian law,
Either capital R should have expressed itself as a dominant, तो red flower आते. If small r was to be a dominant, तो white flower आते. Flowers were not red, not even white. They were pink. So first thing that one needs to understand that the law of dominance is not true in every case, universally not true, correct for every case. Many organisms, majority organisms are the ones in which it can happen, but not in all cases. In all characters, it is not compulsory. Understood this thing? तो फिर इस फिनोमिनन को कहते क्या है? इस फिनोमिनन को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, wherein in a heterozygous condition for a character, two different alleles for a same character, giving two different expression together in an organism. In a heterozygous condition of the organism for a given character, both alleles express themselves and show blended expression. देखो, न तो वो रेड रहा न तो वो व्हाइट रहा, वो क्या बन गया? पिंक एक्सप्रेशन बन गया. देखो, आपके पास चॉकलेट आइसक्रीम है और आपके पास वनीला है, दोनों को मिलके ग्राइंडर में रख के घुमा दो, क्या बन जाएगा? चोकोनीला. न तो वो प्योर वनीला रहेगा न तो वो प्योर चॉकलेट रहेगा. इट विल बी अ ब्लेंडेड एक्सप्रेशन over there. So what I'm trying to say is that neither it remained red nor it remained white. It became blended expression called incomplete dominance phenomenon. Pink color aa gaya. How many have understood the incomplete dominance? No, don't compare with Pomato because वो hybrid है. ये तो दो expressions का blending expression है, तो it's a slightly different one. अगर जिसने यस लिखा है उसमें से कोई अगर डेफिनेशन दे दे मुझे, तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई हाँ, आपको पता चला अबाउट व्हाट इज Pustisha, would you like to define Yes, sir. incomplete dominance? Go ahead. In a heterozygous condition of the organism for a given character, both the alleles express themselves and shows a mixed expression is called as the incomplete dominance. Perfect. The blended or mixed expression of both alleles in a heterozygous condition, that is called as incomplete dominance. जैसे कौन से प्लांट में हुआ ये वर्कआउट? Snapdragon. What is another name of the same? Dog flower. What is another name? The scientific name? Antirrhinum species. अच्छा, पेरेंटल जनरेशन में कौन से प्लांट्स लिए गए? एक था टाइगर, एक था टाइगर, एक था वन ऑफ देम वाज नंदिनी. लिखते हैं प्योर विद द रेड फ्लावर. प्योर सेवरल जनरेशंस के लिए वो रेड फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा था. दूसरा कौन सा था? Pure with the white flower. They were crossed, and F1 generation had a heterozygous generation had a which phenotype of flower? Pink flower. Eats a self fertilization
its selfing led to the F2 generation with which genotypic ratio? अरे हली बेटा, मैं जीनोटाइपिक पूछ रहा हूँ, आप लोग फिनोटाइप लिख रहे हैं। रेड पिंक व्हाइट तो फिनोटाइप था ना, तो बाकी सब भी सिर्फ नंबर लिख रहे हैं। मैं होता तो ये लिखता, अगर स्टूडेंट होता आपकी जगह पे तो ये आंसर देता। कैपिटल R 1, 2 कैपिटल R स्मॉल r 2 स्मॉल r 1, ऐसा लिखता मैं अगर आपकी जगह पे होता तो। लिख के दिखाओ कोई एक। पिंक फ्लावर्स, हाँ ऐसे लिखते हैं। और उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? और इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला था? या एक और साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरेंस। उन्होंने भी फ्लावर कलर वाज स्टडीड बाय हिम इन Mirabilis jalapa plant. Name of the plant was Mirabilis jalapa. उसको 4 o'clock plant कहते हैं। That's its common name, scientific name Mirabilis jalapa, worked upon by Carl Correns। और जो find किया था वो same था, incomplete dominance in plants। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। एक और फिनोमेनन, कोडोमिनेंस करके एक और फिनोमेनन था जिसका स्टडी हुआ था। कैटल में स्टडी हुआ था। बॉडी कोट इन short horn cattle. Short horn cattle से कैरेक्टर पिक किया गया जिसको कहते हैं बॉडी। Yeah, red coat cattle, white coat cattle, and roan. If you can get the pick of these three, so it can be easy for the students to understand. Now, all of you have a look. A cattle with the entire body red in color. Pure for this one. Crossed with the cattle with the entire body white in color. तो पता चला कि F1 में the members were not showing dominance phenomenon. Dominance होता तो either all were having red body या फिर all offsprings of the F1 would have a white body. Interestingly, it was neither red nor white. It was having patches of red and white. इस कुछ कैटल होते हैं जिसके बॉडी पे कुछ पैचेस एक कलर के होते, कुछ पैचेस दूसरे कलर के होते हैं। आपने देखा है ऐसा कैटल? थोड़े बॉडी पे व्हाइट कोट, थोड़े बॉडी पे रेड कोट। उसको रोन कहते हैं, ROAN, रोन, with a mixed patches. Not only that, it was self-fertilized. आप सोचो, allele R for what? Red coat. Allele W for which one? White coat. आपने उसके parent dominant, I mean not dominant, homozygous parents, capital R with the red coat, capital W with the white coat का क्रॉस किया
और F1 में कैपिटल R कैपिटल W वाला हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग कैटल मिला, जिसके बॉडी पे रेड एंड व्हाइट पैचेस दोनों थे, और उसका F1 जनरेशन से सेल्फ फर्टिलाइजेशन से दूसरा जनरेशन पे गए तो पता चला कि जीनोटाइप मिल रहा है कैपिटल R 1 मेंबर, कैपिटल W 2 मेंबर्स एंड कैपिटल W 1 मेंबर। आपको पता है उसका कैसे वर्कआउट करते हैं चेकर बोर्ड, लाइक दिस। फिनोटाइप में पता चला कैपिटल R वाला रेड कोट मिला, कैपिटल W व्हाइट कोट मिला, और कैपिटल R जो हेट्रोजाइगस थे वो रोन मिले। फिर से सेम कंक्लूजन। नंबर 1, law of dominant is not followed in all organisms for all characters. Number 2, here there is something what you call as codominance which is working. अब ये codominance क्या है? So you can see that in a heterozygous condition both allele express themselves. तो आप बोलोगे कि सर ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी होता है, उसकी डेफिनेशन में भी यही है कि इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो यहाँ पे भी इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर अ कैरेक्टर बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो आप बोलोगे कि हाँ सर यहाँ पे भी तो दोनों अलील एक्सप्रेस होते हैं। द वे दे एक्सप्रेस इज डिफरेंट। If both the alleles express and give blended expression, तो उसको कहते हैं incomplete dominance, उसको कहते हैं incomplete dominance, and they give mixed expression or rather an independent expression. तो उस सिनेरियो को कहते हैं कोडोमिनेंस। देखो रेड पैच भी मिले, व्हाइट पैचेस भी मिले। आपको एक डिश के अंदर पीसीस ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम एंड पीसीस ऑफ वैनिला आइसक्रीम विदाउट ब्लेंडिंग देम अगर दिए जाए तो वो भी दोनों फ्लेवर है, लेकिन कैसी है? मेंटेनिंग द डिस्टिंक्टनेस, इंडिपेंडेंस। आपको दूसरे में चॉकलेट एंड वैनिला आइसक्रीम को ब्लेंडर में घुमाने के बाद मिले तो you won't see the chocolate and vanilla distinctly. That is a blended expression. That is an incomplete dominance. How many could understand? देखो कैटल के बॉडी पे पिंक कलर के बॉडी कवर रहता तो आप उसको क्या कहते हैं? टेल मी। रेड कैटल पेरेंट एंड व्हाइट कैटल पेरेंट के क्रॉस से प्रोड्यूस हुए हाइब्रिड कैटल में अगर पिंक कलर रहता तो आप उसको क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, because expression would be the blending of red and white. But instead of that, it had a red patches, it had a white patches, जिसको हमने क्या कहा? Co-dominance, not an incomplete dominance. रिवर्स सोचिए, स्नैपड्रैगन में, डॉग फ्लावर में एक फ्लावर के few petals अगर रेड होते हैं, few petals व्हाइट होते, तो अगेन वहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस तो फॉलो नहीं हुआ, किसी एक ने दूसरे को डोमिनेट नहीं किया। When both alleles expressing themselves, it's not a dominance. But both alleles when express themselves, they maintain their independentness, they maintain their distinctness. तो फिर आप उसको क्या कहते हैं? डॉग फ्लावर में उसको क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहना पड़ता। So always remember, for red and white, two colors, if you give a blended expression, it is called incomplete dominance. For red and white,
both you express but distinctly, then you call it as a codominance. चलो, जिसको ऑनेस्टली पता चला हो, मेरे लिए एक बार यस लिखो तो मुझे पता चले कि आप सुन रहे हो और आप फॉलो कर रहे हो. नहीं पता चला, इट्स ओके, आई कैन रिपीट फॉर यू. इट मच तो आई कैन डू. अगर आप लोग यस या नो लिख सकते हो मेरे लिए, तो मैं उतना तो कर सकता हूं आपके लिए. बोलो, 4 स्टूडेंट ने सिर्फ यस लिखा है. मुझे अच्छा लगता कि बाकी के 50 अगर नो लिखते तो एटलीस्ट पता तो चलता कि सुन रहे हो. समझना तो दूर की बात है. Take it as an attendance and all of you should write down yes. So I will consider कि भाई attendance ले ली हमने. या नो लिखो तो भी चलेगा, रिप्लाई तो आएगा एटलीस्ट आपकी साइड से. Okay, done. Khushali madam, are you ready with the pics? Yes, sir. Yes, ma'am, you can go ahead. देखिए, ये कैटल प्योर व्हाइट, ये कैटल प्योर रेड. यू सी, और इनके क्रॉस से मिलने वाले कैटल रोन. हैव अ लुक एट देम. Got it or not, all of you? देखिए, यहाँ पे भी है ये वाला. Body coat is because of the hair on the body, velvet coating of the hair at the on the body surface. So you can see that the 3 varieties over there: pure red, pure white, and other one is roan. Actually हम W भी नहीं लिख सकते, सीधा लिखना चाहिए R-. Well, with this we conclude today's lecture. Today's extra lecture shall be at 2:45. We will start 3 o'clock. We will run the lecture till 4:30.